वीओए की लाइव स्ट्रीम देखने वालों को खुशामदीद। मुझे अंदाजा है कि आप सबको बहुत बेताबी से इंतजार होगा उस नतीजे का जिसके लिए आपने सैकड़ों तजावीज भेजी। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पैनल के पास सैकड़ों नाम थे जिसमें से उन्हें चूज करना था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उस नेम द शो इनामी मुकाबले की, जिसको जीतने वाले को ये फ्लिप वीडियो कैमरा मिलना था जिसको आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स को विनर होना था। हमारे पास विनर का नाम है, विनिंग नाम है एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम, और इस नाम को सजेस्ट करने वाले हैं पेशेंस टिलेसी। सो कंग्रेचुलेशंस पेशेंस। अगर आप हमें फेसबुक पर कांटेक्ट करके अपना पता और फोन नंबर भेज दें तो आपका कैमरा आपको मेल कर दिया जाएगा। और अगर आप इस वक्त शो देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर मैसेज जरूर कीजिए। बाकी सब लोग भी फेसबुक पर हमें मैसेज कीजिए। ट्विटर पर भी, ट्विटर हैंडल है @a-tanzeem। और अगर आप फेसबुक पर हमें मैसेज करना चाहें तो वो तो आप देख ही रहे हैं, facebook.com/आयशा तंजीम। सवाल पूछें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के सवाल हैं, आपका प्रोग्राम है। अब तो नाम भी आपने चूज कर लिया है। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूं। अमेरिका में जनूबी एशिया के माहिरीन में जो पाए के चंद नाम हैं उनमें डॉक्टर थॉमस लिंच का नाम है। डॉक्टर लिंच, वेलकम टू द शो एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। लेट मी इंट्रोड्यूस यू इन उर्दू टू आवर व्यूअर्स। डॉक्टर लिंच ने जनूबी एशिया पर, पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर, इंडिया पर बहुत काम किया है, बहुत लिखा है। इसके अलावा इस्लाम पर भी, उसके माजी और मुस्तकबिल, इस्लाम में शिदत पसंदी के रुझानात, इन सब मौज़ूआत पर लिखते रहे हैं। अमरीकी महकमा दिफा के लिए भी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। डॉक्टर लिंच, as I mentioned to you in this show is about the viewers and the people who are watching on Facebook, on Ustream, and people who are sending questions on Twitter. And our producer Cassie is actually monitoring Facebook right now, and if new questions come in, we'll go to her. So the first question is from Zain Kalam, and it has two parts. His first part of the question is, do you think Pakistan is America's hired gun for this war against terror? Would Pakistan go into this war if it was not under tremendous pressure? And the second part of the question is, how much is India's role in the region after American troops leave Afghanistan? Thank you, Isha. Thanks for having me here today. It's my pleasure. And I'm happy to comment from my position as a research faculty member at the National Defense University, not as an official representative of the Defense Department. But you talk to enough officials to know what they think, right? I've had that experience, yes. So great to take the question from Zahn, and I think it's an important one to address explicitly. First, from the perspective of the United States policymakers, Pakistan is not a hired gun in this war on terror. In fact, America has explicitly felt that Pakistan's legitimate constitutional government is at risk from those who really are the architects of the wider terrorist war that culminated on 9/11 in Washington, D.C. and New York, but that has led to the deaths of tens of thousands of Muslims around the world, to include many in Pakistan, where the leadership of Al-Qaeda and several of its affiliates have even branded Pakistan's democracy as takfir and an enemy of the type of society they would like to see in the future. So this is not perceived in America or in much of the West as a war that is inimical to Pakistan's interest to remain a free and reasonably fair democratic society. So was Pakistan under pressure to get involved in the war on terrorism back in 2001? Yeah, I think that's also true. Okay, and I think the perception was from America that Pakistan could either begin to participate and help itself, while at the same time helping the Western governments who were at inimical risk of the terrorists led by Osama bin Laden and Ayman Zawahiri, and thereby help prevent the worst from happening to them. And the implicit demarker at that time from the Bush administration was that if Pakistan wouldn't help, America would find countries that would help. And amongst those were certainly Central Arab states and also the state of India. So yes, there was pressure, but it was pressure premised on the notion that Pakistan too
was at risk. So, before you go on to the second question, let me just say some of the things you said in Urdu so our listeners who are more fluent in Urdu can understand it. Dr. Lynch ने इस सवाल के जवाब में ये बताया कि ये सच है कि 11 सितंबर के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव था, मगर इस दबाव में उनके मुताबिक अपनी मदद आपका भी उनसर था, क्योंकि अमेरिका का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान मदद नहीं करेगा तो वो इंडिया से और दूसरे ममालिक से, सेंट्रल अरब ममालिक से मदद ले लेंगे। दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान, अमेरिका का ये ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ पैसों के लिए लड़ता है और उसे पैसे दे दो तो लड़ता है। अमेरिका का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत भी शिद्दत पसंदों के हाथों खतरे में है, क्योंकि अलकायदा के लीडर्स ने पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को अपना दुश्मन करार दे दिया है। तो उनका ये कहना है कि ये माना कि अमेरिका की मर्जी इस जंग में शामिल है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की अपना भी, अमेरिका के ख्याल में पाकिस्तान का अपना भी फायदा है। नाउ डॉक्टर लिंच, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया's रोल इन अफगानिस्तान आफ्टर 2014. Yes, a worthwhile question, but I think it needs to be anchored around the notion of India's long-standing involvement and interest in Afghanistan. As many of your watchers and listeners will know, I mean, Afghanistan has been a central part of South Asia for centuries. And indeed, the relationship between the territories that span from Bangladesh and Bhutan and India straight the way through Pakistan include Afghanistan. Indians have been present in Afghanistan. Indians have studied in Pakistan. Afghans have studied in India and done business in India, and as a consequence, there is an Indian interaction. I also think it's important to note that India has been a strong investor in the future of Afghanistan, with a lot of direct money investment. Indeed, 1.2 billion US dollars pledged to assist Afghanistan economic development, and another several $billion invested in natural resources and extractive purposes now, in Afghanistan. I would just add to this comment you're making. A lot of people in Pakistan are saying, why is India investing so much money in Afghanistan when, to be very honest, there are a lot of poor people in India. So there's a suspicion element in Pakistan. Understandable, but India's drive here, you know, and this is something I study actively, is to acquire the resources, mineral, fossil fuels, and others, and Afghanistan is a rich source of those. Indeed, so is parts of Central Asia, and therefore Indian interest in establishing corridors for gas pipelines and for other types of mineral resources. And indeed, India has invested in Afghanistan and in Western Iran, largely so it can have access to these resources, even if it cannot work towards more positive economic relations in Pakistan, which, by the way, I think it's important for your viewers to note, all objective evidence indicates that India would like more positive economic relations with Pakistan. So these types of resources could transit Pakistani countries, and Pakistani businessmen could get involved in, you know, profiting from the trade as well. Okay, so let me just translate just some of those points. So Dr. Lynch से हमने सवाल ये किया था, जो ज़ैन कलाम का सवाल था कि इंडिया का क्या रोल होगा अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान जो है माफ़ कीजिएगा 2014 में अमेरिका निकल जाएगा। तो उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं, पाकिस्तान बनने से पहले तक। आज भी और पिछली कई दहाइयों में भी इंडियन और अफगान एक दूसरे के मुल्कों में पढ़ने जाते हैं, बिजनेस करते हैं। इंडिया ने बहुत रकम वहां लगाई है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि इंडिया ने ये पैसा अफगानिस्तान में क्यों लगाया है, और पाकिस्तानी इस पर शक भी करते हैं कि इंडिया ने ये पैसा क्यों लगाया है, तो उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान में बहुत सारी मादनियात हैं, गैस हैं, वहां से पाइपलाइंस जा सकती हैं सेंट्रल एशिया। तो इंडिया की ये कोशिश है कि वो मुस्तकबिल में इन ज़राए को इस्तेमाल कर सके। और बल्कि जो एक टैपी पाइपलाइन है तुर्कमानिस्तान, उसमें तो पाकिस्तान, am I right, the TAPI pipeline, Pakistan will also be a beneficiary That's of right. it. Pakistan is the P in The TAPI. P. Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India. And India. तो वो एक ऐसी पाइपलाइन है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। So, Dr. Lynch, let's get to our next question, which is, why does America not respect Pakistan's sovereignty? Everybody in Pakistan wants to know that. We get this question every week. And it's a reasonable question, and I understand how passionate many Pakistanis feel about it as I travel into and out of Pakistan and deal with Pakistanis here in America. It's a complex question because it gets to three dimensions of a difficult issue. First, America's acute concern that foreign leaders of terrorist organizations operating out of Western Pakistan have been responsible
for planning and even executing some of the greatest international terrorist strikes of the last 15 years. And they continue to operate in those tribal areas. Second point is that America believes that despite Pakistan's protests, it does not really exercise full sovereignty in those areas, partly because of constitutional restrictions, but also because of self-imposed limitations, and therefore does not go after aggressively and directly those tribal elements in that region that support and sustain these international terrorist groups that threaten American interests and Western interests. And third, Americans also believe that the Pakistani government, to include its military intelligence complex, has agreed subtly and without real transparency with the people of Pakistan that there shall and can be American targeted strikes to eliminate these foreign fighters Can you repeat in that areas. Pakistani government and the military has agreed and not told the people of Pakistan That's correct. that And there will be and shall be, so that's they're correct. complicit in it? That there will be and can be limited types of these targeted strikes. And so some, not all, but some of these strikes have been as a consequence of tacit Pakistani leadership permission. Okay, and that information doesn't make it, I'm afraid, Aisha, to most Pakistanis. I understand, and I will explain it in Urdu, but two things. One thing, as Dr. Marvin Weinbaum also says, Pakistan doesn't mind the strikes, it's who the strikes hit that they worry about more. So I want you to explain that, but also explain to me, the Pakistan's current government is saying, yes, that was Musharraf's time, maybe there was complicity, but now we don't want it. Is that true? In this day and age today, the drone strikes that are happening today, is the government still complicit? Two answers to that. First, objectively, the answer is yes. And how we know this is that if Pakistan wished to contest the drone strikes, it has a pretty powerful air force and would not be too bothered, I don't think, to be able to go find and attack drones illicitly operating over the country. All right? And secondly, Pakistan has been invited and shown what it can do to eliminate the need for these drone strikes. And that basically would be to take more serious-minded offensive action in North Waziristan particularly against the tribes there that Americans and other Western intelligence agencies believe are nurturing and providing safe haven for these international terrorist elements that not only threaten NATO and coalition soldiers in Afghanistan, but threaten these spectacular plots against targets in Germany, Western Europe, Australia, and the United States. Okay, so let me just explain this in Urdu. तो डॉक्टर लिंच से हमने सवाल ये किया था कि अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम क्यों नहीं करता, और उनका जवाब ये था कि उसमें दो चीज़ें हैं. पहली बात तो ये कि अमेरिका को ये पता है, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान को भी ये बताया गया है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वो दहशतगर्द अनासर हैं जो वहाँ बैठकर अमेरिका, दीगर मगरबी ममालिक और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं. उनका ये कहना था कि पाकिस्तान इस सिलसिले में वो इक़दामात नहीं कर रहा जो उसे करने चाहिए. उसने ये जो अनासर हैं डॉक्टर लिंच के मुताबिक, ये चूँकि दुनिया के दूसरे मुल्कों को ख़तरा है, इसलिए दुनिया के दूसरों मुल्कों को जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना है. दूसरी बात उनका ये कहना था कि ड्रोन स्ट्राइक्स जिन पर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है, उसमें आज की तारीख में भी बकौल डॉक्टर लिंच के पाकिस्तानी हुकूमत की मर्जी शामिल है. उसका इंडिया, उन्होंने कहा, दो चीज़ों से मिलता है. एक तो ये कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता, एयरफोर्स नहीं भेजता वगैरह वगैरह, जो कि वो कर सकता है. दूसरी बात यह कि इन ड्रोन स्ट्राइक्स को ख़त्म करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि उन दहशतगर्द अनासर को पकड़ा जाए जो पाकिस्तान के बस में है, या शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई की जाए, वो अभी तक पाकिस्तान ने नहीं की. तो इस वजह से ये ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं ये बंद नहीं होती. If I could just extend, I do think it's important for me to say, though, that I have advocated in this country that because of the fact so many Pakistanis take umbrage at the drone strikes, that the very nature of the absence of full truth and disclosure about the way in which these are being prosecuted is unfair and is an indictment of both American and Pakistani policy. And I have argued, since the strike against bin Laden, the attack of bin Laden's compound, the United States should offer to unilaterally suspend drone strike actions and work with Pakistan, both the military intelligence and the civilian politicians, to establish a program that is full and open
where it would provide the information to your listeners and your audience that would mitigate against this belief that America is just wantonly violating Pakistani sovereignty, or that it's running a program that is designed to kill innocent Pakistanis. Both of those are not true, and we would benefit if we would change the tone and the tenor of the operation. And I'll come back and ask you about the David Ignatius article, if you read it today in the Washington Post, about the discussion going on in the embassy. But let me just explain this point. ڈاکٹر لنچ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی انتظامیہ کو یہ کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ امریکہ کا خیال ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں دہشت گرد عناصر موجود ہیں، اس کے باوجود امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حق میں امریکہ کو یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر ان ڈرون سٹرائکس کو بند کر دینا چاہیے. پاکستانی حکومت کو بھی اپنے عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ڈرون سٹرائکس ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں، اور امریکہ کو بھی ان کو مزید ٹرانسپیرنٹ یعنی ان کو اوپن شفاف بنانا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ٹارگٹ کون ہے، کس کو کیا جا رہا ہے، کس کی مرضی سے کیا جا رہا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو یک طرفہ طور پر ان پر بند ہونا چاہیے. Mr. Ignatius wrote that there was a discussion going on in the Pakistani embassy, and according to him, Ambassador Munter was involved, in which whether it hurts more when the mission on the ground cannot veto CIA's drone strikes because they might hurt the long-term policy more. I'm wondering if that kind of discussion goes on often. Yes, I think it's important for your audience to know that discussion does go on here, okay? And there are multiple points of view. I, too, happen to come down on the side right now that since bin Laden's death, the benefit to additional drone strikes of eliminating these international terrorists in Western Pakistan is more than offset by the bad public relations engendered with Pakistani society, and that puts at risk the important diplomatic relationship that we need to have with Pakistan. Pakistan, as even Indian politicians say, Pakistan must be stable and must move in the direction of being prosperous for there to be a stable South Asia. That requires diplomatic engagement, interaction, and I fear that the drone strike sovereignty issue could put at risk our diplomatic relations, and that would be horrific for Pakistan and also bad for America. Bad for America. Okay, let me explain it. ڈاکٹر لنچ کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ میں یہاں پہ جو ڈیسیجن میکنگ سرکلز ہیں، یہاں یہ بحث اکثر ہوتی ہے کہ ڈرون سٹرائکس کا فائدہ زیادہ ہے یا اس کا نقصان زیادہ ہے. ڈاکٹر لنچ کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اب یہ جو ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں، ان سے جو پبلک ریلیشنز، جو عوام میں جذبات پاکستانی عوام میں بھڑکتے ہیں، ان کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے. ان کے خیال میں یہ ایسا موقع آ گیا ہے کہ ڈرون سٹرائکس نے سفارتی تعلقات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور پاکستان کا استحکام امریکہ کے لیے بھی بہت اہم ہے. اس لیے ان ڈرون سٹرائکس کو امریکہ کو فی الحال روک دینا چاہیے، یا کم از کم اس وقت تک ملتوی کر دینا چاہیے جب تک پاکستانی حکومت سے بات چیت نہ ہو جائے اور اس پروگرام کو مزید شفاف، مزید اوپن نہ بنایا جائے. یہ جو 2-3 سوال ہم نے آج پوچھے ڈاکٹر لنچ سے، اس میں ایکسپلینیشن کی اتنی ضرورت تھی کہ ہمارا وقت نکل گیا، لیکن ہم اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب ہم نہیں دے پائے. آپ ہماری فیس بک پیج پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ وہاں آئیں، ایک دوسرے کے سوال پر کامنٹ بھی کریں، ایک ہیلدی ڈسکشن ہو ان باتوں پر، اور یہ باتیں آپ کی ہم امریکہ میں جو پالیسی میکنگ سرکلز ہیں پھر ان کے سامنے بھی لے کے جائیں گے. یہ بھی یاد رکھیے کہ کل ہمارا پروگرام پاکستان بھی لائیو سٹریم ہوگا، اس کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. اگلی جمعرات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اسی وقت 9:30 بجے اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.